ये एक एनसीएलटी जजमेंट है, वीज़ा कोक लिमिटेड वर्सेस एमएस मिस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड। नाउ ये आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर है और ये कॉर्पोरेट डेटर है। नाउ दे वर इन बिजनेस रिलेशनशिप। Now, at some point of time, there was a dispute. Now, from which this insolvency, proceeding came into the picture. Now, dispute mainly यहाँ पे है section 8 का. Now, you know that कोई भी insolvency procedure start करने से पहले there is a section 8 which is mandatory. Section 8 talks about जो operational creditor है उनको एक डिमांड नोटिस देना होगा जो कॉरपोरेट डेटर्स होंगे या फिर जो ऑपरेशनल डेटर्स होंगे। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उन्होंने जो नोटिस सर्विस किया, उन्होंने ये सर्विस भेजा था जो की मैनेजरियल पर्सनल है। नाउ की मैनेजरियल पर्सनल जो कि एक सेपरेट जो पेरेंट कंपनी से है और मेन जो यूनिट जिसके साथ इनका ट्रांजैक्शन है वो यूनिट नहीं है, तो ये एनसीएलटी के सामने और इनक्लैट के सामने जो रिस्पोंडेंट है उनका डिफेंस यही रहता है कि जो सर्विस उन्होंने किया था वो सर्विस वैलिड सर्विस नहीं है, बिकॉज इट वाज नॉट डन ऑन द ऑपरेशनल डेटर बट इट वाज रादर डन ऑन द की मैनेजरियल। यहाँ पे लिखा है नोटिस वर एड्रेस टू द कॉर्पोरेट डेटर थ्रू इट्स KMP, बट उनका कहना है कि नो, दैट इज नॉट दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ वैलिड सर्विस। नाउ सुप्रीम कोर्ट यही क्वेश्चन रेज करता है बिकॉज वही मेन डिस्प्यूट है कि सेक्शन 8 का जो सर्विस था ऑन की मैनेजरियल पर्सनल वेदर इट वाज अ वैलिड सर्विस और नॉट। नाउ इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो करते हैं, दे लुक एट फॉर्म 3। नाउ द फॉर्म 3 इज द डेजिग्नेटेड फॉर्म which is used for this demand notice under section 8 of IBC code. Now यहाँ पे mention है Supreme Court notice and highlights that it says name and address of the registered office of the corporate debtor. So not necessarily it has to be on the corporate debtor, but it can also be on the registered office. Whatever might be the case, whether it is the parenting company or this, that is a technical issue, not the substantial issue. And court also highlights on this aspect. Will come. There is a judgment actually that has been enumerated in this. नाउ यहाँ पे एक जजमेंट है केबी पॉलीकेम का, जहाँ पे ये सिमिलर टाइप का कुछ इशू हुआ था और जहाँ पे क्वेश्चन था वेदर deemed service of demand notice under section 8 of IBC is sufficient to trigger the process under section 9 of the IBC. Now deemed notice matlab which is not which can be considered as a notice under section demand notice under section 8, और यहाँ पे जवाब रहता है कि हाँ it can be done. Now there is one other judgment. This is Shubham Jain versus Gagan Firochi something. The issue here also was the same, and it says whether service of demand notice under section 8 of the code on a director of a corporate debtor can be construed as a deemed delivery or not for initiation of corporate insolvency resolution process under section 9 of IBC. And यहाँ पे कह रहा है the court held that service of notice on the director must be held to be good service, and then there is a relevant paragraph. I'll copy paste it. If you need you can use it from there. तो इस केस में क्या है कि even if you serve even to the key managerial personnel or the directors, it is considered as a good service. And to substantiate these two, or to like support these two judgments, there is one other judgment that has been used, and this is slightly different. Amarjit Singh Kalra के केस है जिसमें कहा है
Okay, law of procedure are meant to regulate, effectively assist and aid the object of doing substantial and real justice, not to foreclose even and adjudicating on merit of substantial right of citizen अंडर पर्सनल प्रॉपर्टी और अदर लॉ। कहने का ये मतलब है कि टेक्निकलिटीज आर देयर फॉर अ पर्पस, दे आर देयर टू सर्व द end of justice, not the vice versa. So technicality cannot be the substantial factor, substantial deciding factor when it comes to allowing something or dismissing something, dismissing an appeal or an application. So the court should always look at the substantial right, and in this case, court also said that the respondent contention is not such as that they have not received Section 8 demand notice at all. Their contention or argument is that it was not, they received it, the key managerial personnel, but they are trying to fight on the ground that it was not a valid notice, hence this application should not be allowed. But then court said that no, that's a mere technicality, and those deemed service on the key managerial personnel or directors, they are considered as good service. So कोर्ट ने एट द एंड इसको अलाउ किया और एनसीएलटी को भेज के कहा कि आप लोग इसको मेरिट पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैटर इज रिमांडेड टू एनसीएलटी विच विल एंटरटेन द सेक्शन 9 पिटीशन अफ्रेश ऑन मेरिट. They are not saying that they have to start with the section 9 proceedings, but they will consider it afresh and on the merit. If they have other merits, or if their demand notice has merit, then definitely they can go ahead and start the procedure. So yeah, I think that's everything in this case law. Thank you.